ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन जेंडर स्टडीज एंड वुमेन स्टडीज। In our previous videos, we have discussed definition of gender studies, introduction, on the status of gender studies in Pakistan. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका फोकस डिस्कस करते हैं, देन स्कोप एंड गोल. So focus, when we talk about the gender studies, is that it examines the broader spectrum of gender as a social construct, including role, experiences, and identities of all the genders. अब gender is a social construct means the society creates and defines what it means to be male, female, or any other gender. So, this includes the roles we play, the experiences we have, and how we identify ourselves. ठीक है. अब क्योंकि जेंडर है ना, वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है. ये रोल असाइन होना और एक्सपीरियंसेस, वो सारी जो चीजें होती हैं, और ऑल आर डिटरमाइंड बाय द society. So, for example, like we can take the example, traditional ideas might say that men should be strong, men को strong होना चाहिए, and women should be nurturing and submissive, women को submissive होना चाहिए. However, many people don't fit models, these molds, and everyone's experience with their gender can be different. So this broader view recognizes that gender is not just about biology, but it also shaped by the culture, society, and personal identity. So it allows for a wider range of identities and expressions beyond just men or women. But when we talk about the women studies, so the women studies primarily centers on the women's experience, role, contributions, and struggle throughout history and in contemporary society. जब हम वुमेन स्टडी की बात करते हैं ना, तो उनका जो एंटायर फोकस होता है वो वुमेन के ऊपर ही होता है. इट डज नॉट टेक द अदर जेंडर्स इनटू कंसीडरेशंस. सिर्फ वुमेन की ये बात करते हैं. तो स्कोप ये है कि जेंडर स्टडीज एक इंटरडिसिप्लिनरी जो है एक सब्जेक्ट है, because it often includes other topics such as masculinity, LGBTQ, and the issues, and how gender interacts with the race, class, sexuality, and other social categories as well. But the women studies includes topics like feminist theory, women rights, reproductive rights, historical achievements of women. अब जब हम गोल की बात करेंगे, तो द गोल ऑफ जेंडर स्टडीज इज टू अंडरस्टैंड हाउ जेंडर इन्फ्लुएंस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, culture, and personal identity, and to explore power dynamics related to the gender. अब जब हम उनके एम की बात करेंगे, वुमेन स्टडीज के एम की, तो द एम ऑफ वुमेन स्टडी आर इट एम्स टू एड्रेस इश्यूज स्पेसिफिकली अफेक्टिंग वुमेन. अब इनका यही फोकस होगा कि हम इन इश्यूज को कैसे एड्रेस करें जो इम्पेक्ट कर रहे हैं वुमेन को, एंड एडवोकेट फॉर द जेंडर इक्वलिटी के मेन एंड वुमेन को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, एंड जो वुमेन की कंट्रीब्यूशन है इन एवरी स्फीयर उनको हाईलाइट करना. बट इनका जो गोल होता है वो ब्रॉडर होता है. लाइक जो जेंडर है वो इन्फ्लुएंस कैसे करें वेरियस जो एस्पेक्ट्स है सोसाइटी के, चाहे वो कल्चर हो, पर्सनल आइडेंटिटी हो. ठीक है, और उसके बाद जो है, ओके, सो द ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है, इट्स नॉट ओनली टेक वुमेन बट ऑल द जेंडर्स. उसका नैरो एस्पेक्ट होता है वुमेन स्टडीज का, वुमेन एंड देयर प्रॉब्लम्स, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. एंड जेंडर स्टडीज सी डिफरेंटली प्रॉब्लम लाइव्स इन द वे जेंडर इज कंस्ट्रक्ट. अब ना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. अब जब हम जेंडर स्टडीज में क्या होता है कि मतलब वो चीज को डिफरेंटली देखते हैं ना, कि भाई मतलब प्रॉब्लम्स उसमें है कि जेंडर को कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया है, लाइक कैसे कलर्स जो है असाइन दिए गए हैं,
एडजेक्टिव्स को आप देख लें, आप लैंग्वेज को देख लें, इवन स्पेसेस आर जेंडर्ड, लैंग्वेज इज जेंडर्ड। और आप इवन टॉयज से जो है आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि गर्ल्स है तो उन्होंने डोल से खेलना है, बॉयज है तो गन से, एंड जो कार्स वगैरह होती हैं। एंड वुमेन बिलीव्स that solution of all problems related to women lies in the elimination of patriarchy। अब जेंडर स्टडीज कहते हैं कि प्रॉब्लम उसमें है ना कि जिस तरीके से जेंडर को बनाया गया है, बट ये कहती है ना कि नहीं, patriarchy, elimination of patriarchy is the only solution of all the problems that are related to the women। And gender studies explain how discrimination occurred due to the flawed understanding and construction of gender roles in all aspects of life। Like a quotation है कि one is not born a woman but becomes one। ठीक है। अब जो है ना, जेंडर स्टडीज ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो किस तरीके से हो रही है, मतलब उसके पीछे क्या रीजन है। और उसके बाद जो है ना, ये वो भी एक्सप्लेन करती है कि कंस्ट्रक्शन जेंडर की रोल्स की डिफरेंट जो है ना एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में। लाइक कोई वुमेन, लाइक वन इज नॉट बॉर्न अ वुमेन बट बिकम्स वन, क्योंकि उसको वो रोल दिया जाता है, उसको वो ड्यूटीज असाइन की जाती हैं। तो जेंडर स्टडीज लुक एट हाउ सोसाइटी तो द कोड, especially this quote actually suggests that being a woman is not just biology, but the expectations, behaviors, and the rules the society teaches us। And when we talk about the women studies, so it develops understanding of history and society through the lens of women only. It tries to outline the historical representation of a culture discrimination against women। अब वुमेन स्टडी अगर जो है ना हिस्ट्री या सोसाइटी की भी बात करेगी ना, तो थ्रू लेंस ऑफ वुमेन ओनली, मतलब जो दूसरे जेंडर्स होंगे उनकी बात नहीं होगी। और अगर किसी डिस्क्रिमिनेशन की बात होगी, किसी अनफेयर ट्रीटमेंट की बात होगी, तो वो भी किसकी जो है अगेंस्ट होगी, वो भी वुमेन के पर्सपेक्टिव में होगी, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन होगी। और हम इमरजेंस की बात करते हैं तो द जेंडर स्टडीज की हम बात करें तो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म में। एंड वुमेन स्टडीज की बात करें तो इट इमर्ज्ड इज a result of second wave of feminism। एंड जेंडर स्टडीज ओवरकम सोशल डिफरेंसेस एंड सेक्स डिफरेंसेस, मतलब वो डिफरेंसेस है सोसाइटी के बुनियाद के ऊपर, सोशल डिफरेंसेस या सेक्स के बेस पे जो डिफरेंसेस हैं वो ओवर करने की कोशिश करती है। एंड वुमेन पार्टिसिपेशन इन मेंस ट्रेड, वुमेन जो है उनकी पार्टिसिपेशन इन अदर सेक्टर्स इज वेल, मतलब जहाँ पे ज्यादा मेल की डोमिनेंसी है। और जेंडर स्टडीज का क्या है, एक ब्रॉड स्कोप है, लाइक स्टडी ऑफ जेंडर्स, उनका रिस्पेक्टिव स्टेटस सोसाइटी में। वुमेन स्टडीज को भी, इवन वुमेन स्टडीज की भी हम इनमें बात करते हैं, क्योंकि हम डिफरेंट जेंडर्स को टैकल करते हैं ना जेंडर स्टडीज, तो उसमें वुमेन भी आ जाती है। इवन मेन स्टडीज, क्यूअर स्टडीज एंड सेक्सुअलिटी। और उसके बाद जो है इसमें फेमिनिज्म एक्टिविज्म, फेमिनिस्ट एक्टिविज्म नहीं होता, और मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर है। जब हम वुमेन स्टडी की बात करते हैं तो इट इज इंटर डिसिप्लिनरी इन नेचर। यहाँ पे फेमिनिस्ट एक्टिविज्म होता है, और यहाँ का जो स्कोप इट्स वेरी लिमिटेड, इट्स वेरी नैरो, बिकॉज इट सिक्स टू स्टडी द इशू ऑफ वुमेन, लाइक द इश्यूज ऑफ रिप्रोडक्शन, हेल्थ, एजुकेशन, economic and the political isolation। So it was all about the difference between women studies and gender studies। So in our next lecture, we will be discussing the multidisciplinary nature of gender studies। So thank you and Allah Hafiz।